Hello bachcho, so let's read this question. Which of the following statements is or are correct? Aldehydes are generally oxidized under vigorous conditions. Ketones are easily oxidized to carboxylic acid even under mild oxidizing agents. Third, oxidation of ketones involve carbon-carbon bond cleavage to give a mixture of carboxylic acids having lesser number of carbon atoms than the parent ketones. And fourth, all of the above. तो हमें इससे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. Let us first correct the spelling and let us move on with the question. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, key concept of this question will be oxidation of aldehydes and ketones. तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें ऑफ aldehydes and ketones, aldehydes on oxidizing give carboxylic acid RCOOH, and then ketones की अगर हम बात करें, so ketones, सपोज हमारे पास कीटोन है CH3 CO CH2 CH3. तो एक तो पहली बात ये विगरस कंडीशंस में रिएक्ट करता है, एंड दूसरी बात दैट इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लीवेज मिक्सचर. तो अगर हम इस रिएक्शन की पर्टिकुलरली बात करें तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड क्लीवेज मिक्सचर CH3 CH2 COOH प्लस CO. और हमारा मिथाइल कीटोन के केस में जिसमें हम जिस कीटोन में हमारा मिथाइल एसिड मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो तो CO2 आता है. Now let us talk about the statements which are given to us. Statements में हमें पहला statement दिया हुआ है that aldehydes are generally oxidized under vigorous conditions. So if we talk about aldehydes and its oxidation, so aldehydes are easily oxidized. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid. To carboxylic acids on treatment with common oxidizing agents. हमारे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए जैसे नाइट्रिक एसिड, टोलेंस रिएजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट. और ये ऑक्सीडाइज हमारा एल्डिहाइड्स जो होते हैं हमारे ऑक्सीडाइज इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाते हैं. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे हमारे टोलेंस रिएजेंट, फिलिंग्स रिएजेंट. सो एल्डिहाइड्स में कोई विगरस रिएक्शन का चांस नहीं है. फिलिंग्स रिएजेंट, दे ऑल ऑक्सीडाइज aldehydes. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है all of aldehydes are generally oxidized under vigorous conditions, it is false. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट एंड विच मेक्स आर फोर्थ स्टेटमेंट ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ हमारे पास बचे सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट हमें कह रहा है कीटोन्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इवन अंडर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो अगर हम कीटोन्स की बात करें तो जो हमारे कीटोन्स होते हैं दे आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर विगरस कंडीशंस अनलाइक एल्डिहाइड्स. कीटोन्स आर generally oxidized under vigorous conditions. तो अगर vigorous conditions को हम define करना चाहें, basically it is using strong oxidizing agents. जैसे हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स. Elevated temperatures. The oxidation of ketone involves carbon-carbon. This is we are talking about the third point over here. तो जो हमारा oxidation of ketone होता है, the oxidation of ketone involves carbon-carbon bond cleavage. We will also discuss the reaction. So to afford a mixture, of carboxylic acids
having lesser number of carbon atoms than the parent ketone. तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर फॉर्म होता है, दे हैव लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हमारे रिएक्टेंट साइड के कीटोन में प्रेजेंट होते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम दैन पेरेंट कीटोन. तो अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें, कीटोन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल it is oxidized using only strong oxidizing agents and at elevated temperature. अगर हम strong oxidizing agents की बात करें, strong oxidizing agents हो गए हमारे KMnO4 which is potassium permanganate, और we can say K2Cr2O7, and there are many more. Now if we talk about the reaction, this is our ketone, our CH2 C double bond O, CH2 R dash, and then we are oxidizing it to form RCOH plus R dash CH2COOH plus R CH2COH plus R dash COOH. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा बाय क्लीवेज ऑफ second and third carbon bond, this is our second carbon and this is our third carbon and this is our first carbon. So we can clearly see by cleavage of carbon 2 and carbon 3. सॉरी ये वाला हमारा कार्बन 1 और कार्बन 2 के क्लीवेज से बन रहा है, कार्बन 1 एंड 2, whereas दिस वाला बॉन्ड हमारा कार्बन 2 एंड 3 के क्लीवेज से बन रहा है बाय क्लीवेज ऑफ कार्बन 2 एंड कार्बन 3 बॉन्ड. तो हमने रिएक्शन भी देखी यहाँ पे. एंड इफ वी टॉक अबाउट दी करेक्ट स्टेटमेंट, हमारी सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई बिकॉज इट स्टेट्स दैट कीटोन्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, वेयरएज वी जस्ट सॉ दैट कीटोन्स में हमें विगरस रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर. So this statement becomes false. And if we look at the third statement हमारी कह रही है oxidation of ketones involves carbon-carbon bond cleavage, which we just saw in the reaction, to give a mixture of carboxylic acids having lesser number of carbon atoms than the parent ketone. So this statement is true and hence the correct answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.